I am speaking about something which is called, how to think positive and all that. But today, but today my topic, after a contemplation of many months, I have been working in this area for the last 16 years, researching, writing papers internationally, is that be aware of one thing, and that is being positive. Believe me, be aware of this. People will say think positive, and I'm telling you, be aware of this. I was sharing it with somebody here. I have been in this profession with speaking to people who've been in distress, who've seen a lot of failures, and I've seen lives being destroyed by this one concept of being positive. It's a powerful concept, there's no doubt about it. Powerful concept. But if understood correctly, but if it is understood wrongly, the way it is being understood today, believe me, one of the most dangerous, I have seen people, बच्चा मम्मी से कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, be positive. आपकी फैमिली में डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम में लोग हैं, be positive. You don't even know what the other person is going through. You have all sorts of YouTube videos, book writings. Be positive, be positive, be positive. How can you be positive by just thinking, being positive? Deep down in your heart and my heart, everybody knows. Thinking positive is good. It's important, it's essential. But the way it is being taught to us, I have my problems with this. And this is exactly what I'm going to talk about today. Being positive is a wonderful thing, provided it is taken with a pinch of salt and very cautiously. And I'll come to the point, what do I mean by saying being cautious? So I'm going to be rather serious today. I'm usually a little bit humorous, but I'm sorry, I'm really stricken by this. So, you be positive, fine, but with some caution. And what are those cautions and why? This is what I'll show to you today, alright? And in this, before we start, I'll touch upon some very simple concepts which most of you know, but please bear with me. So we'll discuss how the brain functions first of all, right? Then only we can go to the point which I'm wanting to make here. I'll make it very short. But if you have pen and pencil, kindly help me with one simple exercise if you can do that. What I'll do is, I just recite some names in front of you. I've done my homework. These are names of the countries and the cities. Alright? Just scribble down those names as I speak them. I'll be very quick. Very fast. Don't complain. Don't interrupt me in the middle. So, let's just try this. Okay? Let's just try. But I'll be fast. So let's start. It's United States of America, 7, Nairobi, 5, Yugoslavia, 4, Beijing, 2, Bosnia and Herzegovina, 1, Kazakhstan, 3, Luxembourg, 2, Micronesia, 1, Norway, 3, Turkmenistan, 2, Zimbabwe, 1, Venezuela, 3, Sudan, 2, Boulder, 3, don't stop, keep trying, Glasgow, 4, Christchurch, 2, Montevideo, 1, El Paso, 3, Chicago, 2, Medellin, 4. So now most of the people will stop writing, so I'll stop it here. Alright? Now let me ask you a question. How many of you attempted all of them? Alright, you attempted all of them? You written all of them? Nobody. Alright. 80% you could write all of them? Yeah. With the calculations? Good. Now my question is, during this period, how many times did I bring the mic down? Right. I'm asking you. How many times did I do it? How many times did I touch my collar? Did I use the writing so you cannot see it? That's the point. One point is, now here is, please hear it, most of you know it, but the point I'm making is, this is important to understand, our conscious capacity, that part of the brain which rationalizes, which reasons, which calculates, it is extremely limited, you would endorse. 7 plus minus 2, right? It's limited, correct? Now just understand something else. How many of you drive? How many of you drive a car? Most of us drive. Just imagine, how do we drive? We drive, so we have a steering in one hand,
We have a cup in the other hand, mobile somewhere here. We have, accelerator and we have the rest of the things. At the same time, we are thinking about our spouses back home, the fight we'd had, and our kids would never listen to us, and then we have our boss standing somewhere there, and all sorts of things. And it's extremely hot. So when I get out of it, it's pollution out there, and then I'm hurrying up, and I'm also seeing whether the car in front of me is making a break or not, and then I'm also seeing that which direction I'm going and go in the right direction. How many things? 5 plus minus 2? No. Uncountable. What's it? See, this is the point. See, when you reason, when you consciously calculate, one part of the brain is doing that, 5 plus minus 2. But there is another part of the brain which is doing a lot of work. In fact, the greatest amount of the work is being done by that unconscious part. This we all know. In fact, if that part stops working, there is no reason we will live. Why? Now just think, driving a car, how simple it is. So now the moment the front car stops, how will you react? अच्छा रुक गई, किस स्पीड से रुकी? 60 की स्पीड से. अभी मैं ब्रेक लगाऊंगा 61 की स्पीड से. This simple thing can endanger your life. But do you ever think how to put a brake? How quick? How pressured? In the meanwhile, you also look back, you also look here, and you look that, and then you put a brake unconsciously. Unconscious part of the mind has got immense potential. It's not yet been fathomed. We don't know what is the depth of that. Now here comes the interesting part. The part is, and the interesting part is, and this is the news, the conscious part cannot control the unconscious part. Why? Because if you give this authority to the conscious part, the conscious part तो बेचारा वैसे ही गरीब है. वो तो 5 plus 7 plus minus 2 में बैठा हुआ है. अगर वो इतनी पावरफुल चीज को कंट्रोल करे, it will not be able to do it. It cannot control it directly. It cannot. It never controls it directly. And therefore, this is a power of unconscious mind. But the question is, if the unconscious mind cannot be controlled, then we cannot control our destiny. That means we are in the hands of destiny. Is this what I am suggesting? No. Then how do we control this unconscious mind? How do people who are successful actually control this mind? Because most of the part is being handled. See, that's what happened. Unconscious mind. I'll give you an example. एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया, बोला मुझे लगा मैं मर चुका हूँ. डॉक्टर ने ऊपर से नीचे तक बोला मुझे तो नहीं लगता आप मरे हैं. बोला सर प्रूफ तो करो मुझे, मतलब मैं परेशान हो गया. डॉक्टर ने ऊपर से नीचे देखा, बोला ओके सो व्हाट यू डू इज, एक मिनट रुको. उसने एक चाकू निकाला और उससे पूछा जो लोग मर जाते हैं उनसे खून निकलता है? नहीं. चाकू से उसने उसके हाथ में काटा, खून निकल गया. बोला अब समझ गए? बोला मैं समझ गया, मरे हुए लोगों में से खून निकल सकता है. This is what, no, we're smiling at this. This is what unconscious does. आप किसी को देखते हैं, सब sudden dislike पैदा होता है, sudden liking पैदा होता है. कैसे पैदा होता है? Conscious तो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है. Unconscious आपसे कंट्रोल नहीं हो सकता. फिर आप अपनी डेस्टिनी कैसे कंट्रोल करोगे अगर आप लाइकिंग डिसलाइकिंग ही कंट्रोल नहीं कर सकते किसी की? So here is the point. See, your unconscious you cannot directly control, but you can control it by controlling your experience. Getting the point? How the unconscious works? एक मिनट में मैं आपको दिखाता हूं. See, suppose this is conscious part, right? This is unconscious part, right? जब सिग्नल्स आपकी आंख नाक कान से जाते हैं अंदर, यहां से जाते हैं तो 7 plus minus 2, यहां से जाते हैं इनफिनाइट जा रहे हैं. You cannot control this. अब ये कैसे कंट्रोल होगा? सिंपल सी चीजें समझ लीजिए, साइंस नहीं है. There is something we call a schema. छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये कंट्रोल करते हैं. कैसे करते हैं? सिंपल. बचपन याद कीजिए, जब आपने पहली बार फ्लेम पे हाथ लगाया था, you put your hand, जला था, एक स्कीमा क्रिएट हुआ, ये करेक्ट. अब जब आपने 5 साल की उम्र में दोबारा कैंडल देखी और हाथ लेके पढ़े, all these hundreds and thousands of schema जो आपकी लाइफ में, every moment, even right now a schema is being created in your mind about me. कोई सोच रहा होगा ये पागल है, कोई सोच रहा होगा अच्छी बात बता रहा है. Schema is being created about me. Hundreds, thousands, lakhs of schemas are working here. The moment आपने दूसरी बार उस कैंडल को देखा, सारी स्कीमा बाहर आई. जो रेलेवेंट स्कीमा थी वो यहां रखी, बाकी वापस उस स्कीमा ने कहा बॉस छूना मत. ऐसा नहीं है हर बार फ्लेम में हाथ डाल के देखते हो, अरे यार ये तो गर्म था,
is the beauty of mind. This is the beauty of mind. This is why our mind is not mechanical. अब अगर आपको करना है, किसी बच्चे को समझाना है कैंडल्स में हाथ मत लगाओ, इसलिए आप कहते हैं बेटा हाथ नजदीक लाके तो देखो, आप स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं. You're creating a schema, right? So you're creating a schema. Now why I say that positive thinking may be dangerous. Now just think, आप में से कितने लोग हैं जो I'm afraid of doggies. कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है जो भागते हैं, बड़े बड़े दांत और. Anybody afraid of it? Right. Now what happens? Positive thinking करिए. मेरे पास कितना टाइम हो रहा है? 5 मिनट है? Okay. डॉगी से मेरे को प्रॉब्लम होती थी. One day what happened? मैं अपनी सोसाइटी में अपनी छोटी बहन के साथ घूम रहा था. I'll cut it very short. I was just crossing the path. मैंने देखा सामने से एक आदमी डॉगी को लेके आ गया. That German Shepherd बड़ा सा ये and all that. उसको मैंने देखा, मैं बड़े आराम से अपनी बहन से बात करते हुए जा रहा था. अब सब पूरी दुनिया वैसी चल रही है. अब जैसे ही वो डॉगी आया तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ डॉगी पे और डॉगी का फोकस मेरे पे. I was just watching. अब वो 100 मीटर होगा, ऐसे अभी ये भौंकेगा. अब कुछ बोल रही है मेरी बहन, सब एवरीथिंग इज लॉस्ट. अब मैं उसको देख करके चल रहा हूँ. हाँ 90 मीटर मैंने देखा उसने दांत खोल लिए और उसके मतलब ग्राउल कर रहा है. 80 मीटर मुझे लगा वो तेज चलना शुरू हो गया. वो उसकी जो लीश थी वो टाइट हो गई. अब ये कूदा मेरे ऊपर. 70 मीटर 60 मीटर आते आते आई वाज रेडी टू रन, बिलीव मी. और उसने भागना शुरू किया. राइट एट दैट मोमेंट क्या हुआ, मेरे बगल से निकली. आई सॉ हर. वो गई उस डॉगी के पास, उसको उसने पैट करना शुरू किया. कुची 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 कुची. वो चुप हो गया और उसको चाटना शुरू कर दिया. अब मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था मुझे. मैं सीधे खड़ा हुआ. ठीक है. और मेरी बहन का नाम है मीतू. सो वी केम बैक. मैंने मीतू से कहा मीतू तूने आज मुझे बचा लिया. बोली ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा ये मुझे काटता. मैं आपको कैसे पता? मैं कहा भौंक रहा था मुझे देख के. बोली आपको देख के नहीं भौंक रहा था, ये मुझे देख के भौंक रहा था. ये सामने वालों के घर में रहता है, रोज मुझे बालकनी से दिखता है. आज इसने मुझे पहचान लिया था. सेम थिंग, सेम डॉग. इट क्रिएट्स डिफरेंट स्कीमास. उसके दिमाग में स्कीमा उसके एक्सपीरियंसेस से बना है, मेरे दिमाग में मेरे एक्सपीरियंसेस है. अब अगर मैं ये सोचता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग मुझे डॉगी से डर खत्म कर देगी, तो इसका इंपैक्ट क्या होता है? देखिए, डॉगी सामने है, मैं सोच रहा हूं पॉजिटिव थिंकिंग से अभी मैं इससे डर खत्म कर लूंगा अपना. नाउ सी, डॉगी सामने आया, ऑल द स्कीमास कम. जो डॉगी वाली स्कीमा है वो फोर फ्रंट पे आ गई. करेक्ट. अब उसने भागना शुरू किया. नो 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 पॉजिटिव थिंकिंग. और आगे आई. ठीक है. इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट. नो भौंक रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता. स्टिल आई मस्ट बी पॉजिटिव. आई मस्ट बी पॉजिटिव. उसको तो कुछ नहीं किया ना, उसको तो कुछ नहीं किया. ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजनिंग चल रही है. दिस schema is becoming intenser and intenser and intenser and intenser. It is being reinforced. It is being reinforced. Nothing else. Nothing else. This happens with us. आप कोई आलस छोड़ना चाहते हैं, कुछ भी छोड़ना चाहते हैं, just positive thinking. It only intensifies your schemas. Now then what to do? You have to change your experience. How do you do that? Take the risk. But risk. Believe me, if you will to change, only then go for a positive thinking about certain thing and be aware that if I am taking this path, then at some point in time I have to take a risk. Yes. Some point in time I have to take a risk. Otherwise it's futile. It is going to be devastating. आप अपने डर, अपने fears, अपने stigmas को सिर्फ reinforce करेंगे. Be prepared. Risks are inevitable and I'll have to take them if I want to change it. Yes. Right? But what and how to take the risk? कुत्ते के मुंह में हाथ डालना आसान काम थोड़ी है. So it's a part of a big workshop. वो यहाँ पे नहीं कर सकता, but दो चीजें मैं आपसे शेयर कर दूँ. Time limit हो रहा होगा. There are two things which you can do. 5 more minutes, okay. So two things which I have seen working. One is the people who are usually averse of taking risk.
अच्छा, रिस्क का भी एक डेफिनेशन है. आई मीन एक्चुअली प्लीज जाके मुंह में हाथ डालना भी इट्स नॉट कैलकुलेटेड रिस्क. आई कॉल इट रिस्क मैनेजमेंट रादर देन रिस्क टेकिंग. आप मैनेज करके कर सकते हैं, इंटेलिजेंस के साथ कर सकते हैं. टू थिंग्स, आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में the people who are more risk averse, I have seen that. I got it from a book. If you can read it, the first thing that I have seen is the people who impart permanency to things. शायद आपने पढ़ा भी. Permanency मतलब, for example, आप के बॉस हैं, आज सुबह आप गए और झड़प हो गई, रिएक्शन. चलिए हम क्रिकेट टीम का हिसाब लेते हैं. क्रिकेट टीम जबरदस्त हार गई वेस्ट इंडीज से भी. दो तरह के रिएक्शंस होते हैं. पहला रिएक्शन होता है यार आज अच्छा नहीं खेला, दबा के गाली भी देते हैं. दूसरा रिएक्शन, ये साले खेलते ही नहीं अच्छा. परमानेंसी, ध्यान दीजिए, डिफरेंस है परमानेंसी. एक कह रहा है आज अच्छा नहीं खेले, दूसरा कह रहा है ये खेलते ही नहीं अच्छा. डिफरेंस, सबटल डिफरेंस. बट इट एज अ साइकोएनालिस्ट इट इज गिविंग मी इमेंस इंफॉर्मेशन. जब मुझसे लोग मिलने आते हैं, छोटी छोटी लाइंस गिव्स मी इमेंस इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन. एक परमानेंसी दे रहा है. दिस हैज टू बी ब्रोकन. आप जब भी अपने वाइफ से लड़ते हैं, अपने हस्बैंड से लड़ते हैं, रिएक्शंस नोट कीजिए अपने. आर यू एट्रीब्यूटिंग सर्टेन थिंग्स टू परमानेंस? यार ये तो हमेशा ही ऐसा ही है. और या आप कह रहे हैं क्या बात है आज नाराज ज्यादा है, आप क्या दिक्कत है, 5 साल तक रोज कहिए ना आज नाराज ज्यादा हो. और एक मतलब मैं उन केसेस, क्रॉनिक केसेस की बात नहीं कर रहा हूं, बट एटीट्यूड. सो दिस इज परमानेंसी. आप चीज को परमानेंट एट्रीब्यूट करते हैं या क्या. दूसरी चीज है परवेसिवनेस, ये आप अपने साथ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टेज पे खड़ा हूं, पब्लिक स्पीकिंग में अक्सर इस बात को एग्जाम्पल देता हूं. कुछ लोग स्टेज पे जाते हैं, पहली बार फॉल्टर करते हैं, दोबारा कभी स्टेज पे नहीं चल पाते. मेरी तो स्टोरी ऐसी रही, मैं बताऊं तो उसमें आधा घंटा लगता है. और मतलब तो जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था तो मुझे धक्का मार के स्टेज पे भेजा गया था. मैं स्टेज पे चढ़ा और मैंने बोलना शुरू किया. 2 मिनट में भूल गया. उसके बाद किसी ने मुझे खींचा यहाँ पे, इतना माइक यहाँ पर है, वो तब तक मैं भूलभाल सब कुछ चुका था. तो दैट वाज द स्टेज. बट मैं कहना चाहता हूं कुछ लोग एक बार स्टेज पे चढ़ते हैं, एक फॉल्टरिंग करते हैं एंड दे से मैं ये नहीं कर सकता. दूसरे लोगों का एक्सप्लेनेशन होता है यार मैं कर नहीं पाया इस बार. राइट? एक आदमी ये कह रहा है कि ये मैं कर ही नहीं सकता, ये, और वो उसको फिर हर चीज में डालेगा. वो कहेगा स्टेज में मैं चढ़ नहीं सकता, स्मार्ट में हूं नहीं, बात में लोगों से कर नहीं सकता, ठीक है, सब तो मुझसे ज्यादा परवेसिव. वो उस एक एटीट्यूड को सब चीजों पे डाल रहा है. दूसरा आदमी कह रहा है यार मैं स्टेज पे चढ़ के नहीं बोल सकता, वो तो ठीक है, पर यार मैं अदरवाइज बड़ा स्मार्ट हूं. नो गेटिंग द पॉइंट. दिस इज, ये जब आप एक्सप्लेनेशंस देते हैं, प्लीज बी केयरफुल कि आप कहीं परवेसिव तो नहीं हो रहे हैं. हेलो, मतलब एक गलती हुई, कहीं आपने उस गलती को पूरी पर्सनालिटी में तो नहीं ओढ़ रहे हैं. दिस हैपेंस. एंड व्हेन दिस हैपेंस यू स्टार्ट लुकिंग रिस्क वेयर देयर इज नो रिस्क. आप अब हर चीज को आप कहते हैं वो हमेशा ही होगी, और कहते हैं जी मैं तो ऐसा ही, तो फिर तो सब रिस्क है. दिस इज व्हाट आई हैव सीन. सो व्हेन यू आर हैंडलिंग रिस्क, आई विल नॉट टेक इट too far, but what I want to say is, number one, when it comes to thinking about positive thinking, it's a powerful tool. But please be aware, जब आप इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत you will find it on many places, positive thinking. Please take it in the right way, ठीक है? And be aware you have to implement it one day. Otherwise, आप करियर में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, दिलासा देते हुए अपने आप को. Then 10 years down the line, you will say यार बहुत positive thinking हो, भी चलो वापस वही काम शुरू करते हैं. वो सब ना हो. रिस्क आप समझ लें आपको लेना है. रिस्क लेते समय जो प्रॉब्लम्स हैं अपनी, आप सेल्फ एनालाइज भी कर सकते हैं. यू कैन टेक सम मेंटर आल्सो. दैट इज आल्सो गुड आइडिया, बिकॉज यूजुअली जब आप, आई मीन इट्स एज द सेइंग गोस कि व्हेन यू आर इन द पिक्चर यू कैन नॉट हैव अ लुक एट योरसेल्फ. आप पिक्चर में खुद है तो आप लोग कैसे देखेंगे, दूसरा ही देख सकता है आपको. राइट? सो ये दो चीजें आप एनालाइज करें, देन पॉजिटिव थिंकिंग कैन बिकम अ पोटेंट टूल, पावरफुल. So that's all I want to say. Be positive, but be also intelligent. All right? Thank you very much.